Oh my god, I made a huge mistake. अभी आई जस्ट नोटिस समथिंग अमेजिंग. जॉन्सबो अपने कैबिनेट्स को दो अलग अलग कार्डबोर्ड के अंदर शिफ्ट करता है, एक आउटर सेफ्टी के लिए एंड देन दिस वन जिसके अंदर मेन कैबिनेट रखा हुआ है. इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स जस्ट नाइस. So now let's just unbox this and get the review started. This is beautiful. Oh damn, I can even look at myself. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. Look at my dab. This is Johnny from TechBase and this video is going to be all about a premium cabinet. A cabinet from a company which is called as Jonsbo. And इस cabinet का नाम है Jonsbo U4. Now because it is a premium cabinet, this thing cost at a hefty price point. इसका price है 8,000 Indian rupees. Now 8,000 रुपए के हिसाब से ये चीज कितनी प्रीमियम है? Let's find out, shall we? I must find it out. So U4 एक mid tower cabinet है and yes it does supports both full size 80s motherboard and the small motherboard यानी कि mini 80s motherboard and yes it looks absolutely beautiful. But then I have tried to divide this video into three equal parts. पहला exterior, second interior and third सबका favorite PC building montage. Let's begin with the exterior one. U4 is entirely made out of aluminium. What they have done here is they have used one long single sheet of 2mm thick aluminium and then they have bent it to make the top, front and the bottom, and same thing is done in the back side and the rear side. Yani ki they have only used two sheets of metal and they have carved out a whole entire cabinet out of it. And yes, 2mm thick sheet of aluminium is really very strong and durable. So there is that. Let's just move forward and have a look at the back side. Here they have given 7 expansion slots and in the bottom you get 4 grippy feet and a proper dust filter, which is important for a cabinet which is having a tempered glass. Yes, it is having a tinted 5mm thick tempered glass and next to that they have given the IOS and a power button, 2 USB 3.0s, a headphone jack and a microphone jack which are not labeled. The only thing missing in the IO is the availability of the front HDMI port because virtual reality, right? Now let's have a look inside. जैसे ही we remove tempered glass, we find these lids, which are there to support the glass. Again, super great to have. And after removing the glass, you realize that things are about to turn both good and bad. अच्छी बात यह है कि कैबिनेट के अंदर दो RGB LED स्ट्रिप्स दी गई हैं, both at the bottom and the top, and also they have given two 120mm के RGB fans, again for greater RGB aesthetics. Let's open it up. We find no PSU shroud, but then the presence of this plate gets the job done. फ्रंट फैंस इन पिन से एयर इनटेक करते हैं एंड यस यहाँ पर भी उन्होंने 10 फिल्टर दिया हुआ है. दैट्स अ ग्रेट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज. And this is where the problems start. First of all, इस कैबिनेट के अंदर कहीं पर भी हार्ड ड्राइव माउंट करने की जगह नहीं है at all. The only place is this place. And यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2.5 inch solid state drive, 2.5 inch solid state drive. तो हार्ड ड्राइव कहाँ लगाऊंगा मैं? Oh my god. All they could have done is कि यहाँ पर एक्स्ट्रा होल करते तो यहाँ पर हार्ड ड्राइव लग जाती. But then they have not done it in this place. सिर्फ और सिर्फ they tell us to install solid state drive. But then अभी भी इतने आगे नहीं गया यार कोई भी नेशन कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा ले. इवन लाइनस भी हार्ड ड्राइव लगाता है. नाउ हैव अ लुक एट दिस थिंग. यहाँ पर जो आसान काम था वो जगह है डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पर केबल मैनेजमेंट के लिए जगह नहीं दी गई है. बट दे हैव गिवन यू दीज ब्रैकेट्स इन दिस बॉक्स. तो जिप टाइज भी दिया इन्होंने आपको. यहाँ पर आपने इन्होंने 3M के ब्रैकेट भी दिए हैं. तो इन ब्रैकेट्स को आप निकाल के यहाँ पर चिपका लो. यहाँ चिपका लिया एक, यहाँ चिपका लिया दूसरा, जस्ट टू राउट द केबल्स. बट देन let's have a talk. By all means, this cabinet is a premium cabinet. But I would like to say one thing. जो परेशानियां इसके अंदर हैं, जो दो प्रॉब्लम्स इसके अंदर हैं, वो सच में आउट ऑफ द बॉक्स वाली परेशानियां हैं. Like no cable management की जगह, it is like super insane. And the second one is
no place for hard drive. This is disappointing. But then still अभी भी एक चीज बाकी है, वो है पीसी को बिल्ड करना। तो एक काम करते हैं, इस पीसी के अंदर, इस कैबिनेट के अंदर पीसी को पहले बिल्ड करते हैं, एक प्रॉपर मॉन्टाज बनाते हैं इस चीज का, एंड देन वील टॉक आफ्टर दैट। ओके, बस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। So after building the PC, I have now realized कि जो परेशानी मुझे पहले दिख रही थी वो असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। See, I thought कि इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाने की जगह नहीं है, but then I realized कि यहाँ पर इन्होंने माउंटिंग की जगह दी है, यानी कि 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव जो होती है वो डेफिनेटली इस कैबिनेट के अंदर माउंट हो सकती है, बिकॉज ऑफ दीज होल अलाइनमेंट। यहाँ पर दिया हुआ है वो चीज करने के लिए, ये प्लेट ही हार्ड ड्राइव माउंट करने के लिए दी गई है। एंड इसके अलावा आई वाज थिंकिंग कि ये चीज, these brackets, I was thinking कि ये ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा जस्ट टू डू केबल मैनेजमेंट, बट देन आई रियलाइज कि मदरबोर्ड जिस प्लेट के ऊपर लगा हुआ है उस प्लेट के बीच में अच्छी खासी जगह है, और उस जगह के बीच में से आसानी से हम 24 पिन पावर कनेक्टर या ईपीएस पावर कनेक्टर, यानी कि मोटी मोटी केबल्स को हम आसानी से मदरबोर्ड के और मेन बैक प्लेट के बीच में से निकाल सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर। दैट इज व्हाई मेरा मेन पावर कनेक्टर और मेरा ईपीएस कनेक्टर दोनों के दोनों अब गायब हो चुके हैं, बिकॉज सारी की सारी चीजें मदरबोर्ड के पीछे से आ गई। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि इस चीज के ऊपर मैं क्रिटिसिज्म कैसे करूं, बिकॉज आई कैन स्टिल डू क्रिटिसिज्म, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। यहाँ पर अगर आरजीबी फैंस मिल जाते तो इट वुड बी लाइक इनसेन। एंड देन इसके अंदर एक रीस्टार्ट का बटन नहीं है, सो देयर इज दैट। एंड इफ यू वांट टू नो द डायमेंशंस, हियर गोज द डायमेंशंस। कुछ रह गया क्या अब शायद कुछ भी नहीं रह गया है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स, एल्यूमिनियम बॉडी, 5 मिलीमीटर का टेम्पर्ड ग्लास, 2 आरजीबी की स्ट्रिप्स, 2 रेड कलर के एलईडी फैंस, सामने की साइड रीस्टार्ट का स्विच नहीं है, केबल अलाइनमेंट हो जाती है, हार्ड ड्राइव का माउंट है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का माउंट है, तो ग्रेट। बट देन द मेन क्वेश्चन इज कि शुड यू बाय इट और शुड यू नॉट? Well, I will tell you only one thing. If you are interested in getting yourself a smaller cabinet, तुमको इतना बड़ा huge gigantic cabinet नहीं चाहिए, तुमको छोटी चीज चाहिए, then I think this is a great option. But then still, because इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊंची है, that is why I would like to tell you one thing कि research करना is the most important thing that you need to do. वैसे it is a great option, but अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती ना, मम्मी मजा आ जाता बहुत ज़्यादा। And yes, I know कि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आया था, but then a lot of stuff was going on, guys, so that is why please, I guess is sorry. And then also one more thing, guys, कि अगर तुमको लगा ये वाला वीडियो अच्छा तो प्लीज गिव दिस वीडियो a thumbs up, और अगर नए हो तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग, प्लीज सब्सक्राइब करो, अभी हाल सब्सक्राइब करो। And you know what, if you are already my subscriber, then what the hell are you waiting for? Ring the notification bell. Oh my god. Share, subscribe, like, notification bell. Follow me on Facebook, follow me on Instagram. So those are the links which will be in the description box below, And also if you want to buy this cabinet, then the link is in the description box below. आज का वीडियो इतना ही है। I need to go to the college. मैं कॉलेज जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, I will be taking you guys to the college. So let's just do that. और अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर। टिल देन, स्क्वाड फैम एंड पीस आउट।